वेलकम बैक व्यूअर्स ऑन हेल्थ मेयर्स। मैं हूं आपकी होस्ट सारा अंजम और हम बात कर रहे थे डॉक्टर हमीद के साथ और हम बात कर रहे थे ऑन मेनिंजाइटिस। आइए हम और जाने डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मेनिंजाइटिस के कितने स्टेजेस हैं और उनमें बैक्टीरिया भी है कि खाली वो वायरसेस हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन है बीच में? हाँ, आपको जैसे बताया था कि जो बग्स होते हैं 20 मिनट्स में ग्रो अप होते हैं, तो बड़े स्मार्ट हैं एंड मिलियंस ऑफ ईयर से इवॉल्व हो रहे हैं। जी। तो बैक्टीरिया भी मेनिंजाइटिस करते हैं और वायरसेस भी। एक्चुअली अभी राइट सीजन है। इज वायरस विच कॉल वेस्ट नाइल वायरस इज कॉज इंसेफ्लाइटिस। उसमें होता है कि ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है एंड अनफॉर्चुनेटली एवरी ईयर वी हैव सम डेथ्स हैपनिंग एंड द वे टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, आई मीन इफ यू कुड प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, don't have any standing water around your house, and which is very possible. Small puddle and small equipment or even unused things in the courtyard can store some water and the mosquito can grow there. And the peak season for that is July and August. And har saal we see some people unfortunately not making it. And incidentally it started from in Western Hemisphere from Flushing, Queens, very close to where we are sitting now. So one has to be, again, there's no vaccine for that, there's no treatment for that. But what we can do is be at the lookout for where mosquito can breed and prevent that from happening. And again, if you have a headache, so please proceed to your doctor and go to the hospital. जी, तो ये जो आप मेंशन करे थे वायरस जो है वेस्ट नाइल जी, तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं बिसाइड के घर में कोई लीकेज हो रही है या कोई बग्स हैं, तो कोई जिस्म पे कोई रैश या कोई इचिंग, कुछ ऐसा सिम्टम्स पेशेंट को नजर आ सकता है? हाँ, इसमें फीवर होगा जी, रैश भी हो सकता है और headache, again headache that you never had this kind of headache before, not regular kind of headache. And और सीज़न आप देखिए जुलाई से लेके सितंबर तक अगर है ना, उसमें 3-4 महीने में तो बहुत पीक भी रहता है ये जी। एंड लाइक आई सेड, अभी सबसे ज़्यादा ब्रेन की इन्फेक्शन इसी में आ गई है जी। इसमें द रीज़न आई एम एम्फसाइजिंग दिस इज बिकॉज वी आर नाउ इन मे, सो वेरी सून वील हैव अ मॉस्किटो, यूल बी सीइंग। आप बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं घर के बाहर और आप कहीं पार्क पे गए हैं, हाइकिंग बाइकिंग कर रहे हैं, तो you there'll be mosquitoes around, so you have to be very careful for that. So the thing is again to identify them early and prevent them. If you could have mosquito repellents, and in the first place don't let any water stand in around the house. जी, so हम ये कह सकते हैं कि आपके अभी जो कुछ अभी नियर फ्यूचर में जो पेशेंट्स आएंगे they will be affected with such viruses. जी, क्योंकि पता है कि अपना जब यहाँ आउटब्रेक हुई तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ न्यूयॉर्क सिटी ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। दे वर एस्टोनिश्ड कि कई लोग ऐसे थे जिनको सिर्फ थोड़ा हेडेक था, वो डॉक्टर पास भी नहीं गए और अनफॉर्चुनेटली दूसरा स्पेक्ट्रम था एट द अदर एंड, देयर वर पीपल हु वुड इवन मेक इट, दे डाइड अनफॉर्चुनेटली। और उसमें भी जो सीनियर सिटीजन हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है, 65 से अबव हैं, वो डायबिटिक हैं, वीक हैं, तो अनफॉर्चुनेटली दे डोंट कम आउट गुड विद दिस काइंड ऑफ डिजीज। जी डॉक्टर हमीद, आप मुझे ये बताएं कि आजकल जो हेल्थ जो सेंटर का जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, देयर मोर थिंग्स न्यू कमिंग इन, ओबामा केयर भी आ गई है, डॉक्टर ऑफिस और हॉस्पिटल्स में मोस्टली अब कंप्यूटर्स पे फाइल्स हैं, एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर्स। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Yeah, I think I'm very excited about it, first of all. जी, I mean, I feel like I'm the kid in the candy store. Because what happened is all my life I worked hard to save my patients and help them out, give them all education. Because by the word doctor means teacher, not healer. जी. So I've been teaching my patient how to prevent diseases, how to manage them appropriately if there's a chronic disease like diabetes, high blood pressure or other infection for that matter. लेकिन ये कि there was no communication between the different players. Hospital में patient गया वो आपको इन record नहीं आएगा, किसी और स्पेशलिस्ट के पास गया वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, किसी से अपना दे हैव चेंज द इंश्योरेंस एंड द प्राइमरी के डॉक्टर चेंज हो गया, उसका आपको रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो दिस वाज अ प्रॉब्लम नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट ऑल ओवर, स्पेशली जहाँ के सिंगल पेयर सिस्टम नहीं है। अमेरिका में आपको पता है कि हज़ार इंश्योरेंसेज हैं, डिफरेंट प्लान्स हैं और डिफरेंट एरियाज़ में different kind of set of problems are there. So to put them on one single platform, there's nothing better than information technology. And information technology, as you know, has come a long way. And पिछले 10 साल में बहुत maturation हुई है उसमें और बड़े-बड़े players भी इसमें join किया उन्होंने, and they are trying to make softwares for the hospitals as well as for the offices. So उसकी वजह से क्या integration हो रही है अभी। When I send my patient to specialist, I can send all my record to the patient. They will know what allergies they have
what kind of diseases they have, what जी. medications they take. And तो इसमें similarly, सारा टाइम सेव हो जाता है and उनके. similarly, हाँ and जी. similarly, when the specialist send me the report back, because it takes about sometime an hour or two to understand the patient. जी. And that may not be even as good के अगर आप उसको 5-10 साल से patient को manage कर रहे हैं. जी. So you have so much information. There's no way, no matter how super duper specialist is, they cannot understand the patient as well as the primary care doctor or the person who knows the patient. जी. So if you have the same platform and if you can exchange information back and forth, that's only good for patient and the system as well. जी. Because फिर आप बार बार वही टेस्ट ऑर्डर नहीं करेंगे आप. जी. और उसके बाद unnecessary प्रोसीजर नहीं होंगे, क्योंकि लेट्स से पेशेंट को एकोकार्डियोग्राम जो सोनोग्राम करते हैं हार्ट का, जी. पिछले 2 महीने पहले हुआ था, दोबारा करेंगे क्योंकि आपको रिपोर्ट नहीं मिल रही पिछली. तो अगर आपके पास इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम होगा तो यू डोंट हैव टू बी डूइंग ऑल दिस टेस्ट अगेन एंड अगेन, and which the system pays for that. The cost for everybody goes up then. जी. डॉक्टर हमीद, आपने भी बोला था कि जो डॉक्टर्स हैं वो हीलर नहीं है, वो टीचर हैं. तो जब टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है और स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चंस होते हैं. तो जब पेशेंट्स हॉस्पिटल जाती हैं, डॉक्टर्स के पास जाती हैं, तो उनको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने चाहिए फॉर देयर बेनिफिट? That's a very important question. I think I'm glad that you asked. जी. Because many a time I wish my patient was more prepared for the visit. जी. तो उसमें है कि डायबिटिक पेशेंट है, अपना ब्लड शुगर रिकॉर्ड लेके आइए. अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो अपनी ब्लड प्रेशर रीडिंग ले आइए. क्योंकि कई तो होता है, मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ. मेरी एक पेशेंट है, साउथ अफ्रीका में रहती है. जी. तो वहाँ से जब भी यहाँ आती अपनी बेटी को मिलने, तो उसकी बेटी की सारी फैमिली मेरी पेशेंट है. तो कहते हैं डॉक्टर हमीद के पास दिखाना उसको. तो मैं जब देखता हूँ ब्लड प्रेशर ठीक है, और जब भी वो साउथ अफ्रीकन डॉक्टर जाती है इन साउथ अफ्रीका, ब्लड प्रेशर हाई होता है. तो मैंने हमेशा मैं उससे बात करता हूँ 10-15 मिनट बैठा के, फैमिली का पूछना, क्या कर रही हैं, शादी पे आए बच्चे की, या इस तरह व्हाट यू डूइंग, मेक देम फील कंफर्टेबल एंड देन चेक ब्लड प्रेशर. एंड गेस व्हाट, 10-15-20 पॉइंट का फर्क होता है. तो हियर इट वाज कि मैं उसकी मेडिसिन कम करता था, और जो व्हेनेवर शी गोज बैक टू साउथ अफ्रीका वेयर शी लिव्स, वो तो फिर मैंने नोट डाला कि डॉक्टर प्लीज डू मी अ फेवर, before you check blood pressure, please have her sit down for 20 minutes, 25 minutes, and then check the blood pressure. And studies have shown that. जी. So indeed he did that, and he was so happy. उसके बाद उस पेशेंट ने भी डांटा डॉक्टर को, अपने फैमिली डॉक्टर है, आई डोंट नो हिम. तो कहती डॉक्टर हमीद हमेशा मुझसे पहले बात करते हैं, फिर ब्लड प्रेशर. मैं आती हूँ, तुम ब्लड प्रेशर चेक करते हो, 2 मिनट बाहर निकालते हो. जी. तो बात करने से पेशेंट अगर टेंस है तो ऑफकोर्स ब्लड प्रेशर हाई होगा. जी. जस्ट वॉक्ड इन द न्यू एनवायरनमेंट, इसको बोलते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम, अगेन ब्लड प्रेशर हाई होगा. जी. तो उसको यू हैव टू मेक द फील कंफर्टेबल एंड देन sort of start checking the blood pressure. Many times we over treat the patient then in that sense. तो वही मैं पेशेंट को एजुकेट करता हूँ कि उनके पास मेरे पास एजुकेशन मटेरियल है ब्लड प्रेशर के बारे, डायबिटीज के बारे में, और दूसरी जो कॉमन कंडीशन है स्लीपिंग के बारे में, ईटिंग. आई कॉल माई सेल्फ फूड पुलिस. तो उसके बाद मैंने अपने पेशेंट को शीट दे रखी है जिसमें येस एंड नो लिस्ट है. जी. एंड इंटरेस्टिंगली इनफ ये हो गया कि कई ग्रैंडमा केम टू मी एंड से माय ग्रैंडसन इज सेइंग ग्रैनी आई एम गोइंग टू कंप्लेन डॉक्टर हमीद यू ईटिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड. सो ना सिर्फ जो पेशेंट मेरा है वो लूज कर रहा है वजन, उनके हस्बैंड, उनके बेटे, सारी फैमिली वजन लूज कर रही है. मतलब इट्स सो एम्पावरिंग that I said I must be on the road. So I've been beefing up my diet sheet, which I've asked them to put on the fridge, and I also asked them to eat from their non-dominant hand and 225 times, put the fork down between the bites, and also not to eat anything after 6 o'clock. All these simple things. And again, taking the TV out of the bedroom and not to watch any TV or radio or computer use 3 hours before you go to bed. Then you go to deep, 4th stage sleep. Then you burn more calories. Metabolism will become higher. And of course, excess won't help to hurt too. So you should do exercise. Dr. Hameed, you should write a book. I think this is all common sense things. Yeah, but बहुत लोग जो है ना वो लैक कर देते हैं कॉमन सेंस, या उनको नजरअंदाज कर देते हैं. So people like you will help them, and I wish you much success on that. Yeah, no, thank you. मैंने एक मेरी सक्सेस स्टोरी है. You get me started now here. एक लेडी थी, she was about I think 60 something, and then like most people in developed countries are on the heavy side. So I had her over the last 8 months or so. I had her lose close to 80 pounds, and she was taking 4 pills. One for diabetes, one for high blood pressure, one for cholesterol, one for back pain. Would you believe she came out of all the 4 medicine? I have 90-year-old ladies who are losing weight. And just by these simple things, it's nothing, and it's not that I'm inventing them. Because I'm a professor doctor, I read these studies and I incorporate that in the care of my patients. So then it becomes so relevant, because patient is not how much I know will help the patient, it's just how much patient know about their own health. And these baby steps, if they take,
they go place. जी डॉक्टर साहब मैं भी जानना चाहूँगी कि HIV और एड्स क्या है? अच्छा, ये एक्चुअली वायरस था। अभी हाइपोथेसिस ये है कि ये चिंपैंजीज में और दूसरे एनिमल्स में कैलिफोर्निया अफ्रीका में था, उसके बाद से ये माइग्रेट हो गया ह्यूमन स्पीशीज में आ गया। तो ह्यूमन स्पीशीज में आया तो द प्रॉब्लम विद दिस वायरस इज HIV वायरस कि ये अटैक करता है हमारी इम्यूनिटी पे, ह्यूमन इम्यूनिटी पे। तो देन द इन्फेक्शंस व्हिच कैन जस्ट आर जस्ट न्यूसेंस एंड नथिंग मोर देन दैट बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस। जब मेरे टीचर था जिसका मैंने पहले मेंशन किया था नाम मार्टिन क्रेमर, ही वाज डूइंग a fellowship in 1977 I believe or 8, and then he found out some young people dying or having weird pneumonias which usually are ascribed to or happening in old people. तो उसने सोचना शुरू किया, then they had a infectious disease conferences in New York City, तो कुछ और लोगों के पास भी इसका था। तो that was the first description of AIDS। तो उसके बाद पता चला कि ये वायरस जो है आपकी इम्यूनिटी कितना कमज़ोर करता है कि जिस तरह आप 80 या 90 साल के और 100 साल के ह्यूमन बीइंग है, नॉट लाइक यंग 20-25 ईयर ओल्ड। तो उससे फिर ये जो वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, दे बिकम लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। बट लकीली नाउ वी हैव अबाउट 30+ मेडिसिन्स फॉर दैट, वी आर मैनेजिंग इट प्रॉपर्ली, एंड वेरी सून I'm very optimistic we'll find a solution to cure it and eradicate it. But this time we can contain it, we can manage it, we can make it like diabetes, high blood pressure, asthma. You can never get rid of it once you have it. But if you take the medicine, it will not have any influence on you, and your lifestyle will be normal if you take care of the health. Similarly for HIV disease too, if you manage your disease, go to doctor frequently, get your blood test done, and be compliant with medications, so your adherence rate is good, then I have a lot of patients. And in fact, again story if you permit me to, this is a 85-year-old lady who is a church godmother, very dignified, typical grandma looking lady, and comes to me, she's HIV positive. Her husband is negative and has no relationship with somebody, no known risk factor. So we sat down and trying to see like a detective that I'm sure you must have some exposure. Did you have blood transfusion? You know, never had blood transfusion. Were you ever in hospital having surgery and dental workup? Not really. So then she figured out, when I really made her think, that yes, there was a person who used to live upstairs and he was using drugs, and he used to throw bags with the needles in it in the courtyard, and she would routinely clean them. And on more than one occasion she pricked herself. And she didn't make much of it, you know. And she, like I said, she's 85 or so now. At that time probably she was about 75 or 80. And she didn't make I'm it going to cut you off for a moment. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर हम जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और हम और जानेंगे HIV एंड एड्स के ऊपर।